गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हूँ आम रथ यात्रा पवित्र रथ यात्रा यही उपलक्षे आम मैंने पुणी थे आज तुम जो क्लास आम स्टार्ट करते आज से क्लास को आउ थे पुणी रिज्यूम करवा। तो चलतु आम पुणी से केमिकल काइनेटिक्स जो वीडियो को छाड़ी से पाखर पुणी स्टार्ट करवा। ठीक अच्छे। तो ये वीडियो सब तुम सीएचएससी बोर्ड हो कि सीबीएसई बोर्ड हो सबू बोर्ड बहुत बहुत इंपोर्टेंस रहिबो। मु बहुत सब न्यूमेरिकल्स डिस्कशन करबा प्राय टोटल कंटेंट जति भी केमिस्ट्री रिलेटेड इंपोर्टेंट जिंस हम इस चैनल रे धीरे धीरे करके सब जिंस को शेयर करबा। आपण मानकर हम सपोर्ट दरकार बहुत ए बहुत स्टूडेंट्स को पाखरे वीडियो को पहुंचातु जो माने उपयुक्त शिक्षा पाई पारु नाहंती। ठीक अछि। ताले चलंतु स्टार्ट करबा। लेट्स स्टार्ट। तो आज हमर टॉपिक होची रेट लॉ। ठीक अछि। So what is a rate law? See, it is experimentally derived mathematical expression which gives the relation between concentration of reactant and rate of reaction. यार माने कौन? ए जो एक्सप्रेशन टा हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गोटे लिखिबा ये होची हमर रिलेशन काहा भितरे concentration of reactant और rate of reaction भितरे रिलेशन को आमे rate law रे रिप्रेजेंट करू। So actually what is rate law and what is its statement? Let's see. Rate of a reaction is directly proportional to concentration of reactant. This is your rate law. What is rate law? Rate of a reaction is directly proportional to concentration of reactant. तो आप हमें केमिति लिखिबा देखो rate of a reaction is directly proportional to concentration of reactant and power of concentration n. एमिति रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो याकू ही आमे कोन कहू रेट लॉ बोली कहू। ठीक अछि। आसो गोटे रिएक्शन लिखि कि ता पई रेट लॉ डिराइव करबा। आसो सपोज a of a plus b of b gives product। ये होछ पिला माने तबर गोटे केमिकल रिएक्शन। Small a and small b are coefficient of a reactant a and b. reactant a b रो यूज होती coefficients। हमें coefficients को केमिति पाइबा बाय बैलेंसिंग इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को जते बळे बैलेंस करिवो तमे a b रो कोएफिशिएंट रो वैल्यू पाइबो। ठीक अछि। तो एई रिएक्शन पाई मु केमिति यूज करी कि रेट लिखिबी। आसो देखिबा केमिति हम रेट को रिप्रेजेंट करछे। ताले हम लिखु जे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of a गोटे रिएक्टेंट a अछि इनटू concentration of b कारण रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करछु concentration of reactants है। आ सेमानकर कोएफिशिएंट को पावर न देखि हम लिखिबा पावर ऑफ x एंड y। ता माने रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of a power x and concentration multiplied by concentration of b power y। तो हम पता करियो सर x और y कोन हो यार x and y are the order of a reactant A and B respect। बुझिया सर रेट एक्सप्रेशन बुझिया सर केमिति लिखा जिवो। रेट एक्सप्रेशन केमिति लिखियो उठे रिएक्शन रो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जे रिएक्टेंट थिबे सेमानकर कंसंट्रेशन। ठीक अछि। ताले बुझिलो तमे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
and respective power x and y, where x and y are order of reactant A and B respectively. ठीक अछि. अब जो ए जो रेट टा टोटली हमें केमिति बाहर करबा एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड, टोटली एक्सपेरिमेंटली हमें ए रेट को कैलकुलेट करबा. बुझि पारलो समस्त पूरा बुझि आला, किछ असुविधा नाही. नेक्स्ट चलो हमें देखिबा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट विषय. नेक्स्ट देखो पिला माने मु जदि वर्तमान रेट को लिखिबी, रेट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी सिंबल जदि हटेबा हमें कांस्टेंट का प्रोपोर्शनलिटी मल्टीप्लाई हो जाए तो k इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अले कंसंट्रेशन ऑफ A पावर x इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B पावर y. So what is k? Where k is a rate constant of the reaction. Rate constant of the reaction. k को हमें रेट कांस्टेंट बोली कहबा. ठीक अछि, बुझि पारलो. तो एते बेले पर्यंत जो एक्सप्रेशन को एई एक्सप्रेशन ता रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A पावर x and concentration of B power y. This equation is known as a rate expression. Rate expression. याको हम कोन कहूचे, रेट एक्सप्रेशन बोली कहूचे. तो रेट एक्सप्रेशन कोठु मिलिला हमकु, रेट लॉ रु मिलिला. ताले रेट लॉ को मु आउ थरे कहि दउची केमिति आसिला ना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant power n, where n is order of reaction. ता विषय रे मु आउ किछ समय पर डिस्कशन करिबी. वर्तमान रेट इज इक्वल टू रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of A power x into concentration of B power y, where x and y are order of reactant A and B respectively. And मु जदि याको प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को उठाउची ताले कोन हो, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मल्टीप्लाई हो जाए, प्रोडक्ट साइड से मल्टीप्लाई हो ताले k को मु कोन कहूची, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन. अब ये टोटल जो इक्वेशन वर्तमान लिखले, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स. याको मु कोन कहूची, रेट एक्सप्रेशन. याको समस्त मन रखिबो, या ऊपर बहुत गुडा का निवेदन अछि. ठीक अछि, एति बेला पर्यंत तमे पेज टाको लिखि नियो. ठीक अछि, तापर नेक्स्ट वीडियो. ठीक अछि, तो नेक्स्ट हम पढिबा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट. ठीक अछि, आगे छुआ माने जानो k को हमर कोन कहै जाय. k को तमे रेट कांस्टेंट बोली कहि परिबो, और रेट को तमे वेलोसिटी कांस्टेंट बोली भी कहि परिबो, वेलोसिटी कांस्टेंट बोली कहि परिबो. और रेट को तमे स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन बोली भी कहि परिबो. रेट कांस्टेंट रो एते गुडा का नाम अछि. वर्तमान कैरेक्टरिस्टिक्स कोन माने या संगर रेट रो कोन रिलेशन ना आई रे समस्त देखो जे जदि हायर दी value of rate constant k, faster the value, faster is the reaction. रेट कांस्टेंट रो वैल्यू जेते अधिका हो, रिएक्शन टा सेते अधिका फास्ट हो. काहे कि ना रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमें बोले ना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर n. आ मु जदि आको उठौची, ये ही होची रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर n. ता माने कोन पढिला, रेट का संगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होचे, रेट कांस्टेंट संगे. ता जेते रेट कांस्टेंट बढ़ुची वैल्यू, रेट ऑफ रिएक्शन सेते फास्ट हो. बुझिया. सेकंड मन रखो, कोन लिखुची, rate constant is depends upon initial and final concentration of
रेट कांस्टेंट कहा ऊपर डिपेंड करूचो इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन कारण रेट रो से कहउछ ना जत्ते अधिका रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना छुआ माने ता माने जति इनिशियल कंसंट्रेशन जत्ते अधिका हबो सेते रेट कांस्टेंट रो वैल्यूटा सेते अधिका हो ठीक अछि ए कैरेक्टरिस्टिक को लिखि नियो जति सरी जाय छै डन बोली लिख ठीक अछि नोट करो नेक्स्ट आगे पिला हम देखबा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हमें जानि सारलो जे व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जानि सारले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोन देखो this sum of powers of the concentration of reactants in the rate law expression is called so means called order of reaction ता माने कोन मते प्रथमे सपोज गुटे रिएक्शन पूरी से रिएक्शन को आउ थरे लिखुछ देखो a of a and b of b मते कोन दोचंती प्रोडक्ट दोचंती बुझिया ना तो यहां पई तमे रेट एक्सप्रेशन लिख परिबो ना रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू पावर ऑफ a concentration of a power x into concentration of b power y अब तमे जानि छ what is x is order with respect to a reactant a and y is order with respect to reactant b ता माने ए रिएक्टेंट पई ऑर्डर होची x बी रिएक्टेंट पई ऑर्डर होची y आ एटा होची गुटे रेट एक्सप्रेशन हम कहितली रेट एक्सप्रेशन माने रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट हमें ऑलरेडी पढी सारछे रेट माने कोन रेट है और रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन भीतर रिलेशन को हमें रेट लॉ रो पढी से सेही रेट लॉ रो हमें कोन लिखुचे रेट एक्सप्रेशन और से जो रेट एक्सप्रेशन हमें लिखिले से रेट एक्सप्रेशन रो जो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी x और y आसेला तारे मु लिखिबी ओवरऑल ऑर्डर कोन हो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट एक्सप्रेशन ता माने रेट एक्सप्रेशन रो दु जो रिएक्टेंट आरो कंसंट्रेशन रो पावर अछि जोटा तमे एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करबे एटा तमे निजे कैलकुलेट कर परिबे एटा तुमको एक्सपेरिमेंटली गिवन रहइबो सेटा को ओवरऑल जदि मु x और y को ऐड करबी सम करबी ताले मते कोन मिलबो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बुझि पालो सपोज मु गुटे रिएक्शन लिखिबी सपोज तुमको गुटे रिएक्शन दउची मु सपोज मु लिखिली जे a प्लस b ये तुमको दउची प्रोडक्ट ठीक अछि अब मु या पई ऑर्डर लिखि देली ऑर्डर तुमको कैलकुलेट करिया पड़िबो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू a रो कंसंट्रेशन 1 इनटू b कंसंट्रेशन 2 ताने देखो मते एठी रेट एक्सप्रेशन रो जो रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन ऊपर गिवन अछि से हला ऑर्डर ता माने a पई ऑर्डर 1 दिया जाय छी और b पई ऑर्डर 2 दिया जाय छी ताने ओवरऑल रिएक्शन रो ऑर्डर केते होबो रिएक्शंस ऑर्डर केते होबो ना तमरो ए पावर को ऐड करियो 1 + 2 केते गला ये 3 ताले एई रिएक्शन पाई तमरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन केते होची हम एटा रेट एक्सप्रेशन रो ठीक अछि बुझिया नेक्स्ट हमें देखिबा कोन ना ए जो रेट कांस्टेंट है याकू कोन कहथि रेट कांस्टेंट ए रेट कांस्टेंट रो यूनिट कोन होबो ताले देखि बुझि पालो रेट कांस्टेंट रो यूनिट विषय हमें नेक्स्ट नोट करो तो नेक्स्ट हमें देखिबा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट को लिखबी मु a unit of a rate constant किसे के रो यूनिट विषय मते जानिया पे हो ताले आगे मु रेट एक्सप्रेशन लिखुची रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट into reactant concentration power n what is n where n is equal to order of reaction ताले मु जति मते रेट रो एक्सप्रेशन बाहर करिवार अछि यूनिट बाहर करिवार अछि ताले रेट इज इक्वल टू कोन जेबो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट बाय concentration power n रिएक्टेंट रो concentration power n लेछि मते को concentration power n लिख परिबी आ तमे जानि छ रेट रो
जो यूनिट रेट रो यूनिट कौन थिला चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम इनटू याको तमे कोन लेखुछो तमे लेखुछो 1 बाय कंसंट्रेशन पावर n ठीक अछि तो मु ये एक्सप्रेशन को एमती लिख परिबि ना यार पावर 1 एठी अछि 1 बाय कंसंट्रेशन पावर n तो याको मु लिख परिबि ना कंसंट्रेशन पावर 1 इनटू कंसंट्रेशन 1 बाय हे अछि ए जो पावर माइनस n इनटू मु लिख परिबि टाइम इनवर्स लिखियो ताले जदी बोथ रो बेस सेम थाए पावर कोन हे जाय पावर आपको मिसे दिया जाए ऐड हो जाए ताले मु लिख परिबि कंसंट्रेशन पावर 1 minus n into टाइम रो यूनिट को लिख परिबे सेकंड इनवर्स तो ये हमर गोटे हैला कोन गोटे यूनिट लिख परिबे कोन रेट कांस्टेंट रो यूनिट कंसंट्रेशन पावर 1 minus n n कोन ऑर्डर जते थियो बर्तमान मतलब सेकंड नेक्स्ट देखो अरे तुम जानि थियो ना सब कंसंट्रेशन का कह जाय कंसंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर ताले मु कोन लिखिबी ताले लिखिबो मोल को मु लिख परिबी यूनिट मोल आ वॉल्यूम को लिख परिबी लीटर लिख परिबी ठीक अछि ताले यार कंसंट्रेशन आ गोटे यूनिट कोन कंसंट्रेशन ऑफ वैल्यू को लिखिबी मोल पर लीटर पावर लिखिबी 1 n इनटू सेकंड इनवर्स बर्तमान याको आ के सजेई जदि लिखिबी मु लिख परिबी मोल टू द पावर 1 n इनटू लीटर टू द पावर n minus 1 सेकंड ताले ये होची तमरा रेट कांस्टेंट रो आ गोटे एक्सप्रेशन रो यूनिट तमको जदी कंसंट्रेशन टर्म रे तार यूनिट लिखवार अछि एठी कंसंट्रेशन रो खाली ऑर्डर रो वैल्यू पुट करियो जदी तमको एठी मोल लीटर टर्म रे तार यूनिट बाहर करबार अछि ताले तमे एठी खाली कोन पुट करियो n बदल रो तार ऑर्डर रो वैल्यू पुट बुझि पालो तुमको जदि डेरिवेशन तुमको भूली जाओ तो एई दीटा एक्सप्रेशन को जदि तुम ऑलरेडी मन रखिबो दैट इज मोर देन एनफ तुम पय या सफिशिएंट हो ताले रेट कांस्टेंट रो गोटे यूनिट होची कंसंट्रेशन 1 n इनटू सेकंड इनवर्स आ गोटे होची मोल 1 n लीटर n 1 सेकंड ठीक अछि याको नोट कर तो हम पुनी एबे पिला माने स्टार्ट करबा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रो किछि कैरेक्टरिस्टिक्स विषय रे हम जानिबार अछि कोन ताले एई ऑर्डर रो वैल्यू केते रो केते भीतर हेई परिबो फर्स्ट पता हला ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये होची टोटली एक्सपेरिमेंटल जहां को रेट एक्सप्रेशन रे लिखा जाय एक्सपेरिमेंटल सेकंड पॉइंट होची order of a reaction may be zero order of गोटे reaction रो order 0 हे परिबो 1 हे परिबो 2 हे परिबो 3 हे परिबो but never exceed 3 रु अधिका order हे परिबो ना मन रखियो 0 ही परिबो 1 ही परिबो 2 ही परिबो 3 ही परिबो 3 रु अधिका हो नै ऑर्डर थर्ड जिंस ऑर्डर में भी नेगेटिव ऑर्डर नेगेटिव भी हे परिबो पॉजिटिव तो हे परिबो पॉजिटिव भी हे परिबो फ्रैक्शन भी हे परिबो फ्रैक्शन माने पॉइंट रेस परिबो ऑर्डर कोन हे परिबो ए 0 टू 3 भितरे माने 3 पर्यंत मैक्सिमम होबो ता भितर तार वैल्यू पॉजिटिव हे परिबो नेगेटिव और फ्रैक्शन पॉइंट भग्नांश रे भी आसी परिबो बुझियला नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखो ऑर्डर is calculated means derived देखो derived for both elementary and complex reaction order को आमे both elementary reaction आउ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोथ पाई हमें कैलकुलेट कर परिबा तार तरीका अलग अलग अछि
तो आमे सेटा को पुणी नेक्स्ट आ किछ समय परे कि नेक्स्ट वीडियो रे ताको ऑलरेडी आउथरे हम देखिबा से केमिति ऑर्डर को एलिमेंटरी रिएक्शन पाई और ऑर्डर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पाई बाहर करे तो आउथरे को कहि दोची ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल एंड आउट एक्सपेरिमेंटल लुक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी 0 1 2 3 0 ही परिबो 1 ही परिबो 2 3 ही परिबो 3 रु एक्सीड परिबो नाही यार वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन भी परिबो ऑर्डर इज डिराइव्ड फ्रॉम बोथ डिराइव माने हमें एलिमेंटरी रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोथ रिएक्शन पाई हमें ऑर्डर को लिखि पारिबा वर्तमान हम जो दीटा यूनिट रेट कांस्टेंट रो लिखिथिले ताले से रेट कांस्टेंट रो यूनिट हम वर्तमान 0 टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पाई कैलकुलेट करके देखिबा ठीक अछि एई फार्मूला दीटा हम से पे लिखै नै तो हम करके देखै वर्तमान देखो सपोज मो कहली फॉर 0th ऑर्डर रिएक्शन देखो फॉर 0th ऑर्डर रिएक्शन 0th ऑर्डर रिएक्शन में पिला माने ऑर्डर केते हेला 0th माने कोन 0 ऑर्डर रिएक्शन ता माने मते रेट कांस्टेंट रो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कोन हो देखो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट केते हो ताले एठी मु केवल 0 पुट करबी जदी मु एठी 0 पुट करूची ताले केते हेला कंसंट्रेशन को मु लिख पारिबे रेट कांस्टेंट रो यूनिट कोन ताके लिख पारिबी मोलार इनटू सेकंड इनवर्स बुझमा जदी कंसंट्रेशन टर्म में कोन लिखबी मोलार इनटू सेकंड इनवर्स आउ जदी और आउ गोटे मते मोल और लीटर लिखबार अछि पुनी या बदले ए बदले 0 या बदले 0 पुट करियार अछि 1 0 कते हेला से एटरो हेला 1 0 1 जे -1 ताले रेट कांस्टेंट रो आउ गोटे यूनिट इन टर्म ऑफ मोल और लीटर में कोन हो ना मोल इनटू लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ताले दीटा यूनिट हे जिवो 0th ऑर्डर रिएक्शन पाई तमरा रेट कांस्टेंट रो यूनिट बुझिया ठीक सेमती मु जदी कहबी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन माने n = 1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पाई रेट कांस्टेंट रो यूनिट कोन हो ताले जेति एबे ऑर्डर ताको 0 पकोछु जेति 1 पके ताले 1 - 1 हेला 0 ताले समथिंग टू द पावर 0 से चले 1 आ जाय ताले ये तो टर्म तो 1 हेला ओनली कोन रहइबो सेकंड इनवर्स अब तमे एई टर्म पाइबे जति पकेइबो 1 - 1 बोथ 0 हेला ताले मोल रो पावर 0 माने समथिंग टू द पावर 0 से 1 लीटर भी टू द पावर 0 हेला से भी 1 ओनली रहला सेकंड ताले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पाई यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट होची सेकंड कांस्टेंट ठीक सेमिति तम पाई एटा होमवर्क तमे फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आउ फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तम मानक पाई कोन होबो तमे कमेंट सेक्शन में मते कहि के देखिबो जे रेट कांस्टेंट रो यूनिट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कोन तो मते जणा जदि डाउट रहला नेक्स्ट क्लास रे हम को डिस्कस थैंक यू